Hello dear students, welcome back to the virtual classroom of the quest. आज आमे Gauss law रो different applications पढ़िबा. तमर GE रे Gauss law रो application रे line charge distribution रे केमते आमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा सेटा गोटे एप्लिकेशन अछि. बट आमे एई वीडियो रे कोन करबा दीटा एप्लिकेशन पढ़िबा. गोटे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो आ गोटे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दीटा केस रे केमते आमे गोटे पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा आमे सेटा डिस्कशन करबा. ठीक अच्छे हेले लास्ट क्लास रे आमे कोन पढ़िथिले गॉस लॉ विषय रे पढ़िथिले तार इंटीग्रल फॉर्म पढ़िथिले तार डिफरेंशियल फॉर्म पढ़िथिले. गॉस लॉ कोन स्टेट करथिला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज सरफेस in which the charge electric charges are there, then flux is equal to the 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in the surface area. इसे हम पढ़िथिले आ तार एप्लीकेशन टा मैच ये रे पढ़िबा. Let us consider the line charge distribution है infinitely long charge conductor रे और rod रे charge उड़ा को distribute है चंदी है ना. infinitely long conductor रे charge सब distribute है ची. Let us consider positive charge distribute है ची. आ गोटे point P which is at a normal distance of r from the charge distribution. Let us find out the electric field at point P. है to do this हम कौन करिया पड़िबो गोटे cylindrical Gaussian surface नवा पड़िबो. Cylindrical Gaussian surface coaxial with that line charge distribution. Let us consider a cylindrical Gaussian surface of radius r. Gaussian surface of radius r. Okay. Which is coaxial to this line charge distribution. Let this area of cross section be A and the length of the cylinder be L. है ना हेले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जदि हेची ताहले linear charge density यार let us consider that the linear charge density of the line charge distribution is lambda. है ना हेले आमे देखिबा जे टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस सरफेस Gaussian surface ताहले कोन हबो will be equal to field at this point P. है ना हेले एडी कोन सरफेस अछि तीनटा सरफेस अछि सिलिंडर रो तीनटा सरफेस अछि. गोटे हला एटा गोटे सर्कुलर सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दीटा of area is equal to A. आउ गोटे cylindrical surface ये जो cylindrical surface टा हैला. किंतु देखिला बेले हम कोन करबा हमर फार्मूला होची flux phi is equal to E dot ds integral over E dot ds हैला और integral over E dot n cap ds where n cap is a unit vector normal to the surface area. हेले ए केस रे हमें देखिबा इलेक्ट्रिक फील्ड at this point will be on the surface area. The area vector or n cap will be directed in this way, n cap which is perpendicular to the surface area. Now electric field will be in this direction. Electric field will be in this direction, radial direction from the charge. हेले दीटा को भितर एंगल केते रहबो n आउ e भितर एंगल होची 90 डिग्री. So cos theta will be equal to cos 90 degree will be equal to 0. So ए दीटा surface जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस अछि सेठी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दोज सरफेसेस will be equal to 0. हैला किंतु इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस cylindrical surface will be finite. हैला that will be the flux linked with the Gaussian surface. Okay, let us find out what is the flux linked with the Gaussian surface through this cylindrical surface of the small cylinder we have considered. Okay, so
Now let us consider a small infinitesimal small surface area ds at this point P, whose unit vector will be along normal to this surface area, will be along this direction, and also electric field at this point will be directed in this direction. Okay, radial direction. So electric field will be in same direction, electric field will be in same direction. So what will be the flux? Small flux linked with the small surface area ds are placed at point P. केते आसीबो? ds d phi e electric flux is equal to what? E dot n cap ds. एठी e और n भितरे एंगल केते अछि? 0 अछि. cos 0 is equal to 1 हैला. तो एटा हे जिवो सिंपली e ds हैला. e ds. अच्छा, flux is equal to, अच्छा जदि total flux linked with the entire surface area cylindrical surface ताहले कोन हबो बाहर करबा. तो that is equal to total linked flux will be equal to integral over this small fraction d phi e, which equal to integral over this e ds over the entire closed surface 0 to s. अच्छा, okay, so e will be taken out and ds. अच्छा, ए cylindrical surface रो surface area केते integral over ds केते आसीबो? ए cylindrical surface रो surface area जति के आसीबो हैला. कर्व surface रो जति के surface area आसीबो सेति की तमरो ds integral over ds आसीबो. केते आसीबो एटा? 2 एटा होची, this is 2 pi r into l. Okay, so e 2 pi r into l. R is the radius of the cylinder. So this is equal to what? Total flux linked with the curved surface of the Gaussian cylindrical surface. कहीं ना ए डी सरफेस रे किछि हेले फ्लक्स लिंक करनी, केवल कर्व सरफेस रे ही फ्लक्स लिंक करूची. आ तार वैल्यू केते हैला? तार वैल्यू हैला e 2 pi r into l हैला. According to Gauss law that flux phi e linked with a closed surface will be equal to charge enclosed inside it divided by epsilon naught. हेले जदि जो यार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होची, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होची, डेंसिटी होची लैम्बडा, लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, ताले q टा कोन लिख दी परिबी? q इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर लैम्बडा dl हैला 0 to l. लेंथ इज फ्रॉम 0 to l जोटा की लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस हैला. तो एटा केते आसला? लैम्बडा इनटू l. तो चार्ज रो वैल्यू आसला लैम्बडा इनटू l, व्हिच इज enclosed inside the Gaussian surface हैला. तो यदि चार्ज एति के आसला by epsilon naught is equal to phi e. Gauss law रो कोन हम जानबे? Gauss law रो हम लिख दे परिबा. Gauss law लिख दे परिबा. देखो एटा होची at point P electric field is directed along the surface element, direction of the surface element n cap ds. Okay, so according to Gauss law phi e will be equal to q by epsilon naught. q टा में पाइले lambda into l by epsilon naught हैला. एले आमे कैलकुलेट कर ले केते? फ्लक्स इज इक्वल टू e into 2 pi r l.
So let us put that value over here. 2 pi r l e is equal to this much. So this implies E is equal to electric field at point P will be equal to kete asibo 1 by 2 pi epsilon naught lambda L divided by R L. L will cancel out. So lambda by R asibo na. This implies E will be equal to 1 by 2 pi epsilon naught lambda by R. This is the electric field intensity linked with at the point P near the charge distribution, linear charge distribution. ठीक अच्छे एबे देखिबा जदि गोटे सरफेस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है ना जदि गोटे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जेमते वो कहितली एठी हमें आ गोटे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढिबा जोटा कि गोटे जदि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होची इवेनली चार्जटा गोटे स्फीयर रे डिस्ट्रीब्यूट हेची ताहले तार जे कोनसी पाखरे गोटे पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ केते आसीबो हला हेले एटा होची वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ हला हेले देखो माने कर लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेयर चार्ज टा इवनली चारियाडे डिस्ट्रीब्यूट हेची विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हला माने कर रेडियस टा यार वॉल्यूम रो होची आर रेडियस रे से चार्ज टा डिस्ट्रीब्यूट हेची हला लेट अस कंसीडर अनदर पॉइंट P नियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जोटी कि हमको कौन कर अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाहर कर है ताहले एठी जदि ए पॉइंट P रे बाहर कर अच्छी ताहले पॉइंट P ऊपर मो कौन करबी गोटे स्फेरिकल गाउसियन सरफेस नेबी गोटे स्फेरिकल गाउसियन सरफेस मु नेबी एठो P ऊपर co-central with the charge distribution hela spherical surface which is at a distance r small r from the center hela hele ei surface through re jeti ki amar Gauss law kon कहला flux linked with the Gaussian surface phi e will be equal to total charge inside the surface q divided by epsilon naught एटा हला फार्मूला हेले ए सरफेस रे वैल्यू अच्छा phi e let us consider a small surface element at the point P so that a small flux linked with that surface can be calculated अच्छा ds surface नेली ताहले surface रो unit vector along the surface area n cap which is normal to the surface हला आउ फील्ड डायरेक्शन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मध्ये रेडियली हो तो दीटा का भीतर एंगल केते हो 0 हो जिवो तो एठी हमर कोन आसला इंटीग्रल ओवर e डॉट n कैप ds थीटा इज इक्वल टू 0 तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 तो ये कोन हला इंटीग्रल ओवर e ds cos theta is equal to 1 हला जदि मु एंटायर गॉसियन सरफेस रे केति की फ्लक्स लिंक होची सेटा देखिबी ताले दैट इज इक्वल टू phi e इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर d phi e which equal to इंटीग्रल ओवर e ds अच्छा ए सरफेस टा कोन गोटे स्फेरिकल सरफेस तो एंटायर सरफेस ऊपर जदि इंटीग्रल करिवा हमर वैल्यू केते आसीबो 4 pi r स्क्वायर आसीबो r इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस हला तो एटा इज इक्वल टू केते दिस इज इक्वल टू q by epsilon naught दैट इज इक्वल टू q by epsilon naught हला सो
field रो वैल्यू केते आसो at point P field रो वैल्यू केते आसो E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. सॉरी स्टूडेंट्स मुझे जो क्लास नौली से मोर फोनटा ऑटोमेटिक बंद हो गला मुझे विषय जानी नी क्लास सरला देखला कि रेकर्ड हो नाला तो से कौन कली स्नापशॉट नहीं गली आउ से एक्सप्लेन करदेवी तुम भावुची बुझीपर ले आमर ई वैल्यू आसला इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आसला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर क्यू रो वैल्यू केते क्यू होची रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ताहले वॉल्यूम टार वैल्यू पका 4/3 पाई आर क्यू आर इज द रेडियस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सेटा केते आसीबो E इज इक्वल टू आसीबो रो आर क्यू कैपिटल आर क्यू डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यू ताहले एटी कौन आसला आमर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्डटा आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन है सेटा है inversely proportional to square of the distance from the center of the charge. तापर एबे सरफेस रे आम केते की इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो से देखिबा कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर ऑन द सरफेस ताहले कोन आसला पुट कर देले हमर आसला रो आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हेले एठी हम कोन पाइले इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तापर इनसाइड द स्फीयर रे जदि आम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू बाहर करवा ताहले कोन आसीबो ताहले जो चार्जटा को एनक्लोज करूथुवा हमर गाउसियन सरफेस से चार्ज सेति वॉल्यूम रो चार्ज रो फ्लक्सटा आमे पाइबा हला कि ही कंट्रीब्यूट करिवो टुवर्ड्स द फ्लक्स हेले फ्लक्स रो वैल्यू केते आसीबो फ्लक्स रो वैल्यू आसीबो रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू व्हिच इज द वॉल्यूम ऑफ द small Gaussian surface divided by epsilon naught ला से वैल्यूटा जिते आम पुट करवा आमको कौन मिल ई वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रे वैल्यू केते आसीबो रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आसीबो हला हेले आर तार अर्थ कौन एटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस तो कौन होची जदि आम सेंटर रू स्टार्ट करवा ताहले इलेक्ट्रिक फील्डटा प्रथमे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस हम तापरे से कौन हम एट द सरफेस से कौन हम रो आर कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हम मैक्सिमम वैल्यू तापरे सरफेस पर सेटा ग्रेजुअली डिक्रीज हम तार्थ इलेक्ट्रिक फील्डटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला रे आसीबो है तो आम जदि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जदि आम गोटे ग्राफ टाणिबा ताहले ये कौन हम गोटे जो ग्राफटा प्लॉट होती से भाया देखा है तो इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस.